Hello everyone, very good morning. Can you confirm me? Are you able to hear? Am I audible? So this is not a news now, RBI Grade B notification. So all of us knew that this is coming today. We have been telling it for now more than a month. But the idea of doing this live session today is because now it's official notification available on the website of RBI. You can start submitting your applications. Okay. If you have any question, feel free to ask in the chat. And also, I am going to talk about the important things in the notification today here. Meanwhile, I am also sharing a Google form here in the description. You have any question, if you watch this video afterwards, or you when you go through the notification, you will occur through some of the questions. So you can ask in that Google form. Don't hesitate to ask anything. Low voice. अभी मेरा voice low है. आई एम थिंकिंग एक्चुअली आई एम यूजिंग ईयरफोन फॉर वॉइस. थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा. ओके, चल आई ट्राई. इज इट बेटर नाउ? एवरीवन इज राइटिंग नो लो वॉइस. यस, लेट मी कंफर्म वेदर यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली. अब मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे दैट इज मेनली अबाउट व्हाट इज देयर इन दिस नोटिफिकेशन. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, what are the exam pattern, what are the eligibility criteria. You have any question, feel free to ask me. So is it better? Okay, Amit is saying it is better now. Okay, thank you for confirming. You have any question after this session also, or during this session also? During this session, so you can ask me in live, but after the session you can ask in Google form, or if you don't want to ask live, because sometimes there are some questions people feel hesitation asking in a live chat where everybody other is also reading or listening. So in that case you can ask in this Google form. Okay. So one more request, that many of your friend need your help. आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें ये कंफ्यूजन रहता है. तो अगर आप इस सेशन का लिंक अभी उनके साथ शेयर करेंगे तो शायद वो भी अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे. इट विल हेल्प अदर्स. इट विल हेल्प बिकॉज समटाइम विच लुक्स वेरी इजी टू यू, ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम ऐसा नोटिफिकेशन पढ़ रहा होता है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा होता है, उनके लिए वो बात जो हमारे लिए बहुत ऑब्वियस होती है वो भी शायद बहुत यूजफुल हो सकती है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स राइट नाउ, so that others also can get the benefit of live session, because उनके जो प्रश्न होंगे अभी हम लाइव उनका जवाब दे पाएंगे. So now coming to the dates. So date of the exam was already known to us, but now it is there in the website, so it's official notification. So this is आपका 28 मई, जो पहले से मालूम है, बट अभी अब सबको मालूम है कि 28 मई is the date and today is 28th March. तो अपने पास पूरा का पूरा 2 महीना है. आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है व्हेन आरबीआई इज गिविंग यू कंप्लीट 2 मंथ फॉर योर प्रिपरेशन. पूरे 2 महीने एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम की डेट तक, और उसके बाद भी आपके पास इफ यू सी 25th of June, उसके बाद भी आपके पास पूरे 27 दिन है फॉर फेज 2. So this time actually you have a lot of time prior to the exam and after the notification is out. और उससे भी ज्यादा तो DSIM और DEPR. So we will come to that, what is DSIM and DEPR if you don't know, but many of you must be knowing about this. This is the specialized cadre. Specialized cadre है D, Department of Statistics and Information Management is DSIM, और DEPR इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च. जो लोग आरबीआई ग्रेड बी जनरल में जाते हैं, सो दिस इज जनरल. जनरल मीन्स यू विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट. एनी ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स बैंकिंग डिपार्टमेंट, इशू डिपार्टमेंट, inspection which is in DBS, then central office it becomes department of it was called DBOD earlier, now it is called Department of Supervision, right? So these kind of Department of Regulation and Department of Supervision, two separate department, or it is DEI or IDMD,
देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, सम 15 गुड डिपार्टमेंट्स हैं आरबीआई। तो जर्नल के जो लोग हैं उनकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में होती रहती है, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द योर एक्सपर्टाइज ऑल्सो। आफ्टर सम टाइम यू विल डेवलप सम एक्सपर्टाइज। कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है। मुंबई में ज्यादा डिपार्टमेंट है, रीजनल ऑफिस में कम होते हैं। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल हियर इन जर्नल। तो हम इसकी ज्यादा बात करते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी जर्नल में कैसे आपको तैयारी करनी है। कमिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल अगर आप देखेंगे तो 294 वैकेंसीज है, बट एज आई सेड मोस्ट ऑफ यू विल बी गोइंग फॉर द जर्नल कैटेगरी, सॉरी जर्नल ग्रेड। कैटेगरी में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, तो हम इसको अनरिजर्व बोलेंगे। जनरल कैटेगरी इज कॉल्ड अनरिजर्व, राइट? सो दिस इज अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी, इट इज बाय द कास्ट है। तो हियर यू हैव 109 पोस्ट, बिकॉज रिजर्व कैटेगरी की कुछ पोस्ट पहले भी रह गई होंगी, इसलिए रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट 50% से ज्यादा हो रही है। अगर आप देखेंगे तो यू मे से हाउ इज इट सो, it is less than 50% because there must be some vacancies of the earlier years which are yet to be fulfilled, right? So likewise in DEPR, actually DEPR में बहुत vacancy है, 31, and also 25 in DSIM. So actually RBI is recruiting good number of officers in these specialized department. अगर मैं साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी लेता रहूं, बिकॉज अदरवाइज लास्ट तक बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। विल बी परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभिषेक इस बार कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, तो दिस इज वन चेंज अभिषेक। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पिछली बार मेंशन किया था, दिस टाइम इट इज साइलेंट, द नोटिफिकेशन इज साइलेंट ऑन दैट। तो देन यू एक्सपेक्ट द सेम 60% क्राइटेरिया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, बिकॉज अगर कुछ नहीं लिखा है तो इट इज graduation, so it will be 60%. You can ask to RBI. पे अलाउंसेस की हमने बहुत बार बात करी है, तो दिस इज जस्ट योर ग्रॉस सैलरी इन एडिशन टू दिस सैलरी। तो 1,08,000 तो लिखा ही है आरबीआई ने नोटिफिकेशन में। इन एडिशन टू दिस सैलरी यू विल हैव लॉट मेनी अलाउंसेस, इंक्लूडिंग वेरी गुड accommodation and other facilities. Even the fuel allowance itself is now, with the price of petrol touching almost 100 rupees, it's I think more than 100 in Mumbai. तो वही आपका 20-25 हजार रुपया, 20,000 रुपया तो वही बना देगा आपको पर मंथ। खैर, तो वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट अबाउट द पर्क्स, फैसिलिटीज एंड पे। वो तो आरबीआई में अमंग द बेस्ट है, मे बी द हाईएस्ट इन एनी गवर्नमेंट जॉब। अराउंड 30 लाख रुपीज का सीटीसी तो आ ही जाएगा आपको। या सीटीसी टर्म्स इट विल बी इजीली 30 लाख रुपीज। Now coming to more important point, eligibility. सबसे important क्या है? First you have to check whether you are eligible for the exam. अगर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, पहली चीज आप वो समझ लीजिए। दूसरा, एग्जाम में करना क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। इन दो चीज पे ज्यादा बात करेंगे, एंड यू हैव क्वेश्चंस आई विल आंसर। आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन आउट नॉट ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन, व्हाई? सो संजय, इसका आंसर तो आरबीआई ही दे सकता है कि वो कहां पर क्या रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, तो कैन नॉट आंसर दैट। सूर्य इज आस्किंग, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, आई डोंट हैव इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट राइट नाउ, विल फिल माय फॉर्म? हाँ, आप फॉर्म फिल कर लो, लेकिन आप बाद में सर्टिफिकेट ले लेना। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। See, at the time of submission of the form, they are not asking for the certificate. Say, for example, even for graduation certificate, for some reason I have not collected from my university. Okay, बाद में collect कर लेंगे। Person with keratoconus eligible. So, as Pandey, I'm sorry, I don't know what is keratoconus, this situation. So, if you can ask this in the Google form, we will try to find out and answer you on email. सर, फॉर्म भरने के एक दिक्कत आ रही है, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट नंबर में सर क्या देना है? ओके, तो नंबर, हाँ, तो आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिए। अगर आप फर्स्ट क्लास है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पे आते हैं। दिलीप, आप बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी में, आप इंडियन सिटीजन, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर इंडियन सिटीजन, बट अदर सिटीजन ऑफ लाइक नेपाल, भूटान माइग्रेटेड फ्रॉम
countries like Pakistan, Burma, Sri Lanka are also eligible, Kenya वगैरह. So I'm not going into that detail because there can be one or two people like that who have come from Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, people of the Indian origin. That is important. So is in such case, if you have any query, you ask please on the Google sheet. यहाँ पर टाइम बचाते हुए आगे चलते हैं. एज लिमिट बहुत ही क्लियरली लिख दिया है. यू हैव not to be born earlier to January 292 and not later than January 1, 2001. इन दोनों डेट्स में अगर आपका बर्थ है अगर तभी भी आप एलिजिबल हो. सिंपल. तो 21 to 31 years, 21 years to 30 years is there, but वो कौन सा डेट है क्या है? तो सिंपल 2 जनवरी 92 से 1 जनवरी 2001 तक उसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है यू आर एलिजिबल. एज रिलैक्सेशंस आर देयर. क्या है एज रिलैक्सेशंस? अप टू 5 years फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द रिजर्व पोस्ट फॉर देम, राइट? 3 years in case of the OBC, 5 years for ex-employee of the banking institution whose services have been terminated because of bank went into liquidation. तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है. एक्सपीरियंस वालों के लिए नीचे आता हूं मैं. अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years in case of the ex-serviceman including commissioned officer, ECO, SSCO. सो ये उनके लिए है अगर आप एक्स सर्विस मैन है. मेनी ऑफ यू आस्क फॉर एक्चुअली this having work experience. This is more important for many of you. So here this time notification clarifies upper age limit is related to the extent of the number of completed years in such experience up to maximum of 3 years, right? Maximum 3 years है. और क्लियर क्या किया आरबीआई ने कि लास्ट टाइम लिखा होता था institutions in public sector, but this time they have clarified all scheduled commercial bank. हमने पहले भी बहुत बार अपने नोटिफिकेशन वीडियोस में बताया हुआ है कि it means all scheduled bank, not only public sector bank but also private bank. This time they have written it very very clearly. एमफिल और पीएचडी की क्वालिफिकेशन के लिए जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है. आई एम कमिंग टू दिस वन वेयर वी गेट मोस्ट ऑफ क्वेरीज. बट इन दिस ऑल्सो इट शेल नॉट बी एक्सीडिंग 33 years. अगर सपोज आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है एंड 7 साल में फर्स्ट 2 years विल बी प्रोबेशन, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड. क्लियरली मेंशन्ड हियर, प्रोबेशन पीरियड विल नॉट बी काउंटेड. So then you will say I have now 5 years of work count experience, so 2 I am excluding probationary period, but I am 35 years, so it will not work. Maximum up to 33 years and maximum up to 3 years of the relaxation. Okay, तो इतना ही मिलेगा आपको. और यहाँ पर बहुत क्लियरली लिख दिया है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, commercial bank, including the second schedule of RBI. So second schedule of RBI, if you have any doubt, go to the RBI website. In second schedule, which are the bank, it is clearly mentioned. Almost all banks are there in the second schedule of RBI. Almost all bank, I am telling you, is including the small finance bank. पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो भी आपकी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एलआईसी, जीआईसी, ऑल इंश्योरेंस कंपनी, देन इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम बैंक, नबार्ड, एनएसबी, सिडबी, all are included. If some name is not mentioned here, you can still get this relaxation, so don't hesitate, because mentioning this list, RBI has clarified all institutions in the sector of finance are eligible for this. Okay, I don't think now there is any doubt on that. I am taking your questions on this. So I'm coming to the education qualification now, because most of the questions are coming on education qualification. Master's degree in distance. So Manu, I am reading this. Any such course from recognized university or institute is eligible. तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको कि डिस्टेंस कोर्स है, बिकॉज इट्स ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से somebody has done it from IGNOU. So not to worry. 3 years ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, क्लियरली लिखा है. सेम वे 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. ओके, देन MBA में डुअल स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग प्लस फाइनेंस. May I apply for DSIM? I'll come to that, Nilu. You may, provided
the number of courses in the finance or economics or statistics which is mentioned in the notification are more than 50% or something is mentioned. I'll come and read. ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो, but I will read right now in this video. कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपको चेक करना पड़ेगा विनायक, आपके सर्टिफिकेट कब तक के लिए होता है, बिकॉज इसका जानकारी मुझे नहीं है, बट आपने तो लिखा ही है 21 22, तो 22 वाला तो एक्सेप्टेड होगा ही, बिकॉज वी आर स्टिल इन 22, तो इट शैल नॉट बी एन इशू. बीकॉम 55%, एमकॉम 73. हाँ, अप्लाई कर सकते हो ना मुकेश, देखो बहुत क्लियरली लिखा है, रीड दिस. ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन, और एंड नहीं है, ठीक है, दिस इज ओ आर, और हिंदी में बोलो तो दिस, या हिंदी में बोलो तो इसका मतलब हुआ या, दोनों नहीं चाहिए आपको, ए प्लस नहीं है, ऑब्लिक है, ठीक है. तो 55% मार्क्स अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, अगर आपने हिस्ट्री से किया है, जियोग्राफी से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, एमबीए किया है, with 55% marks you are eligible. चाहे आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स 40% है कि 45%, डज नॉट मैटर. आई एम सेइंग इट क्लियरली विद एग्जांपल. सो आपके अगर केवल ग्रेजुएशन डिग्री है, वहां पे 60% है, देन यू आर एलिजिबल. ग्रेजुएशन डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन में आपके 60 प्लस हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. यू हैव टू सेटिस्फाई वन ऑफ द कंडीशन. In case of SC, ST, PWBD candidate, 50% in graduation and pass for post graduation. किसी भी परसेंटेज के साथ अगर आपने पास किया SC, ST, PWD, तो आप एलिजिबल हो. नोट कंफ्यूजन हियर. मास्टर डिग्री इन डिस्टेंस विल बी काउंटेड, नो प्रॉब्लम मनु, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है डिस्टेंस की प्रॉब्लम है. रिकॉग्नाइज डिग्री फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, सो डिग्री इज डिग्री, राइट. गवर्नमेंट पार्लेंस में अगर मैं बात करूं, इफ यू आर मास्टर्स, यू आर मास्टर्स. You have 3-year LLB, Lakshay is writing, with 62%. Yes, so LLB is a bachelor's degree, so you are eligible, Lakshay. And Gautami, yes, MBA finance 80% marks, where is the doubt? Gautami, me to correct hai. I have 80% in BCom. BCom last year nahi, Crown Music. What is your aggregate? इधर भी clearly लिखा रहता है aggregate. Let me read. Graduation level with a recognized university. I am not able to read that line, but it is always written aggregate marks. Okay, तो कहीं पे तो लिखा होगा, मैंने पूरा नोटिफिकेशन कॉपी नहीं किया, बट इट इज अवेलेबल विद मी इफ वी नीड टू ओपन दैट. बट एग्रीगेट होता है ओवरऑल, और जो आपकी यूनिवर्सिटी काउंट करती है वो माना जाएगा. आई डोंट हैव पोस्ट ग्रेड डिग्री क्राउन म्यूजिक, इट्स फाइन, यू डोंट हैव पोस्ट ग्रेड डिग्री, बट आपका बीकॉम का ओवरऑल 60% प्लस होता है, तो यू आर एलिजिबल. केतन शिवानी, exact 60% in BTech, can I apply? Yes, yes, you can apply, Ketan, because 60% ही लिखा है ना minimum. Final year student eligible, Prince? No, final year students are not eligible, because यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2022. तो आपका जो ये एजुकेशन होना चाहिए वो दिसंबर 21 तक पूरा हो जाना चाहिए. यू कैन राइट बोथ AK. I have all 3 certificate, caste, income and OBC, but in form they are asking this caste income certificate. हाँ, आप ये लिख लो, और नहीं तो आप मेरे को ये क्वेश्चन फिर हमको ईमेल पे पूछे, गूगल फॉर्म में पूछिए, देन वी हैव टू सी केस बाय केस. इग्नू डिग्री, हाँ गगन, इग्नू डिग्री इज एलिजिबल. डिग्री नहीं मिली अभी, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. डिग्री आपने कर लिया ना दिसंबर में पास, तो डिग्री मिलने में तो टाइम लगता है. एवरी यूनिवर्सिटी टेक्स टाइम. फर्स्ट दे गिव TDC, और डिग्री तो कॉन्वोकेशन के बाद मिलती है, डिग्री सब जगह लेट मिलती है. लेकिन उस डेट में एज ऑन 1 जनवरी 2022 यू शैल बी एलिजिबल फॉर एज, एजुकेशन, एवरीथिंग. नीलू इज सेइंग MBA में मार्केटिंग प्लस फाइनेंस है विद इक्वल वेटेज. हाँ, यस, DSIM में आप कर लोगे अप्लाई, अभी आते हैं उस पर नीचे, क्योंकि इक्वल वेटेज है तो आ जाएगा. PhD इन संस्कृत, एनी रिलैक्सेशन फॉर राजभाषा, ये देखना पड़ेगा किशोर शर्मा. तो प्लीज राइट सो दैट आई डोंट फॉरगेट इन गूगल. और आप नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा राजभाषा, मैंने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं.
I am final year student. Siddhant is asking, my degree marks will be available before phase 1, but not before 18th April. Should I apply? नहीं नहीं, आप तो फाइनल ईयर के हो, तो एज ऑन जनवरी 2022 नहीं हो रहा है आपका. यू वांट टू अप्लाई फॉर जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, दैट्स डिफरेंट, बट यू वोंट बी एलिजिबल, राइट? यू वोंट बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम, क्योंकि आप एज ऑन जनवरी 2022, जनवरी 1 2022 आप एलिजिबल नहीं हो. डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में ऐसा नहीं है प्रवीण. डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हिंदी में होता है, एक्सेप्ट द पेपर ऑफ इंग्लिश. प्रवीण का क्वेश्चन जो है, what is the pre-exam date? 28th May, Shubham. We started with that only. Is any criteria for 10th and 12th? No, it is not there, Mr. Engineer. अभी 10th और 12th के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है. पहले हुआ करता था, अभी 10th 12th के लिए कुछ भी नहीं है. आपके मार्क्स कितने भी कम हो वहाँ पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. हम भी तभी एलिजिबल हो, हमारे टाइम में भी नहीं होता था, नहीं तो हम तो सेकंड डिवीजन आते थे, तो कैसे होता है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. Exam be going to launch any study plan for working people? Neetu Shukla, yes, we are already doing this. See, if you see how our course is given, our course is pre-recorded, all notes are there, short videos 10 minutes बाद 12 minutes, उसमें से आपको सेलेक्टिव पढ़ना है डिपेंडिंग ऑन यूर रिक्वायरमेंट. और वीडियो स्किप करने का तरीका क्या है, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन. अगर आपको कॉन्सेप्ट चेक आ रहे हैं तो वीडियो देखो ही मत, एंड दिस वे यू कैन सेलेक्ट व्हाट टू स्टडी. लाइव क्लास में जब आप आओगे, डेली वी आर डूइंग लाइव क्लास, एंड वी डू लाइव क्लास इन द इवनिंग. इवनिंग में हमारी क्लास रात में 10 बजे तक चलती रहती है. देयर यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चन. So we have already given this 75 days plan. You have to squeeze it 60 days plan. Sushil sir is working on that. तो अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एग्जाम बी में we have structured it like this. एज कट ऑफ हमने बता दिया. ज्योति, डेट्स आपको बता दिए, ये रही एज कट ऑफ की डेट, फिर से दिखा देते हैं आपको. दैट इज 21 to 30 years. ओके, नाउ एज 21 ऑन 20th जनवरी. आप डेट ऑफ बर्थ देख लो गिरीश. अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जनवरी 1992 से 2001 के बीच आ रही है तो यू आर एलिजिबल. कौन सा, ये देखिए, 2 जनवरी, सॉरी 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2001 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो यू आर एलिजिबल. कोई टेंशन ही नहीं है ना. गिरीश आप ये देख लो. आई हैव, निकिता इज सेइंग आई हैव 55% इन ग्रेजुएशन एंड 82% इन पोस्ट ग्रेजुएशन. हाँ, एम आई एलिजिबल और नॉट? बिल्कुल एलिजिबल हो निकिता. 55% इन ग्रेजुएशन एंड 82% इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 82% है तो आप एलिजिबल हो ही गए ना. नो वरी. इज दिस पॉसिबल फॉर बिगनर्स इन 75 days? Priyashish Acharya is asking this. So at the end of this session, I am going to tell that, but still I can add in one line. See, the best time to start the preparation already gone. अब क्या है आपके हाथ में, अभी आप शुरू करोगे, तो अभी आप नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. अभी आप शुरू करोगे तो सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. So if you don't prepare, the probability of getting selected is zero है एकदम. लेकिन अगर आप अभी भी शुरू करोगे, the probability of getting selected is something. So for somebody the probability may be like 1 by 1000, for somebody the probability may be 1 by 10,000, for somebody the probability may be 1 by 100. It depends on how much time you are going to give, what is your preparation today, what is your background today. So even if you have not prepared for this exam, you may have prepared for something, NDA, CDS, CAT, that anything you have done, or maybe you have studied economics, finance, depending on from which background you come, what kind of student you have been. So there are many criteria. When I tell people कि मैंने तो फेस टू की तैयारी 1 हफ्ता करी थी, लोगों को यकीन नहीं आता है. But I had a reasonable background. I knew economics that time because I was studying agriculture economics in my post graduation. I studied management because I was doing a course on PGD HRM. I could not complete that course. I was doing it from IGNU, but that helped me in RBI syllabus. तो वो बहुत बार ये सब फैक्टर्स होते हैं.
तो 75 डेज आपके पास हैं, आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। लेकिन अगर नहीं देंगे एग्जाम, नहीं तैयारी करेंगे, केवल एग्जाम देने से भी नहीं होगा, यू हैव टू प्रिपेयर। परसेंटेज कैलकुलेशन फॉर यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर्ड, यस गगन, यूनिवर्सिटी का ही कंसिडर किया जाएगा परसेंटेज कैलकुलेशन। आई एम कमिंग टू दैट। वन टेबल गिवन बाय डिस्टेंस एमबीए इज आल्सो एलिजिबल। ठीक है, डिस्टेंस कोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिग्री हो, चाहे एमबीए हो चाहे ग्रेजुएशन हो। जितना कि मुझे पता है, आरबीआई ग्रेड बी में मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड एस्पिरेंट आर फ्रॉम आई एग्जाम बी। यस राजेंद्र, आपको सही पता है। एंड इस बार वो नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि because of the last time success, so more people are coming and we have done some good batches. Now we are seeing the preparation of our students, so this time this number will increase further. RBI versus Citi, HSBC, JP Morgan, as you already have both the experience, what kind of work life balance are there? So मनोज, वर्क लाइफ बैलेंस ना पर्सन टू पर्सन भी बहुत वेरी करता है। आरबीआई में तो बहुत सारा वर्क लाइफ बैलेंस है, बिकॉज आरबीआई इज ए 5 डे वर्क, सैटरडे संडे कुछ है नहीं करने के लिए। इन जनरल एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर, and in those 5 days also you really won't have much work pressure, but in some of the departments there may be some operations pressure, and it depends again on how much you want to take it, because there are again some department where you enjoy work so much that you want to work late hours, you want to close some assignment, because work gives us a lot of satisfaction, I'm telling you. So I have worked in RBI, I was inspecting banks, so I was with one of general manager, we were doing head office inspections. We used to sit up to even 12 o'clock in the night. We were enjoying that. It was having so much of learning and so much of enthusiasm about the work we are doing. So sometimes it is enjoyable also. If you don't enjoy, then there are other seats where one can have comparatively comfortable work. So a lot of such areas are there in RBI. In private bank also it is like that, whether it is Citi, JP or HSBC, Standard Chartered or anywhere big bank. So I would say in private sector, you see what is your profile. If you are into some very specialist profile, you come from very good education background and you are into say investment banking, merchant banking, corporate banking, having very top-notch job where you are doing very good finance-related work. So maybe you enjoy that, because that will give you a career which you can build in longer run. But if you are into some general banking operations, so RBI you will enjoy more, because in RBI you are going to work with the central bank of the country. So it also depends on the profile. If you have any such specific detail, write on the Google form. I will reply on email. ओके, डिस्टेंस मोड एलिजिबल, परसेंटेज कैलकुलेशन यूनिवर्सिटी में उस पर आता हूँ सर, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। यस ज्योति रंजन, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। इंटरव्यू इन हिंदी यू हैव टू यूज शुद्ध हिंदी और नॉर्मल हिंदी। नहीं सिद्धांत, आपको नॉर्मल हिंदी बोलनी है। नोबडी एक्सपेक्ट यू टू से, अब आरबीआई की बात कर रहे हैं तो कोई आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने वाला कि भारतीय रिजर्व बैंक का देश की मौद्रिक नीति में क्या योगदान है, तो आप बोलोगे आदरणीय महोदय, मैं देश के केंद्रीय बैंक के सापेक्ष में, ऐसा हिंदी कौन बोल सकता है, बहुत मुश्किल है, राइट? So yeah, you can say okay, RBI देश का सेंट्रल बैंक है and as it goes to the monetary policy, so functional हिंदी मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश भी होगी तो चलेगा, बट नॉट टू मच ऑफ द कॉमन वर्ड। टेक्निकल वर्ड जहां तक होते हैं, पैनल को ही दिक्कत हो जाएगी अगर आप बहुत टेक्निकल वर्ड बोलने लग गए। तो आप बैंकिंग को बैंकिंग बोलोगे, मॉनेटरी पॉलिसी बोलोगे, फिस्कल को फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हो, क्योंकि नहीं तो वो पैनल मेंबर्स को भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के टर्म समझने में दिक्कत होगी। आइडिया क्या है, यू आर नॉट इवेल्युएटेड देयर ऑन योर लैंग्वेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू है आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है, हाउ गुड यू आर बी एज एन ऑफिसर, आप कितने अच्छे ऑफिसर हो, आप कितने अच्छे टीम मेंबर हो सकते हो, आप आरबीआई में किस तरीके से वैल्यू एड कर सकते हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। So many a time people coming from the education background or the reason Hindi belt people, they are not very comfortable in speaking in English, but by passing the exam, first phase 1 objective written, then phase 2 descriptive,
You have already proven that you have working knowledge of English. Working knowledge of English is required. आरबीआई में जाके कौन सा हमें लिटरेचर लिखना है, लेकिन वर्किंग नॉलेज बहुत जरूरी है इंग्लिश की, क्योंकि काम तो बहुत सारा टेक्निकल काम इंग्लिश में होता है. तो दैट यू हैव प्रूव्ड. सो देन इन इंटरव्यू यू कैन जस्ट टॉक इन हिंदी. एंड आई नो पीपल, जब 50 मार्क्स का होता था इंटरव्यू, 42 मार्क्स तक मैंने देखे हुए हैं हिंदी में. हिंदी में अपियर किया था और 42 मार्क्स आए थे. तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, बट यू हैव टू पास. ओके, ओबीसी एज का मैंने बात कर ली. डिस्टेंस लेवल 3 ईयर एमबीए, या यू आर एलिजिबल. अगर 3 ईयर है तो 3 ईयर है आपका. वंडर, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम साइंस स्टूडेंट, हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स टॉपिक फॉर आरबीआई ग्रेड बी. सो in this video, because I have to do many questions here, wonder. So what I would suggest you, you need not to study economics first. Understand the syllabus is ESI, economic and social issues. So for economics, you have to just understand the fundamentals. You have to understand the basics. Say for example, you need to understand what is GDP, how it is calculated, how it is different from GNP, what is national income, balance of payment, what is that. So you have to understand inflation, basic types of inflation. But many questions you will find, actually most of the questions in ESI will come from what is happening today. What is the impact on inflation now when there is this global crisis because of the Russia Ukraine war, it is going on? What Fed Reserve is going to do, what RBI is doing, how the change in the, say, petrol price impact the inflation, how the change in the interest rate impact inflation. So considering what is happening all around, you have to understand that in the today's scenario. That will help you in answering the question. So basics of economics. Otherwise, the topic is economic and social issues. So you have to understand more what is happening all around us. It's a good combination. So it is not that you have to read the complete book of any macroeconomy, whether it is Mishra, Puri, Datta Sundaram, or Ramesh Singh. Be very, very selective. Go to the previous year paper. You will realize what kind of questions have been asked. These previous year paper are available for free at our website. MBA student, distance mode, I have answered this many a time. Many people are asking distance mode, MBA student. Yes, you are eligible. Kiran launched the material for RBI Grade B. We have already material for RBI Grade B. Uh, Sir, born on 20th April 2001. Can I appear in the exam? No, because this last date is 2nd January 2001. High distance mode, MBA student eligible? Yes, little things eligible. RBI content reasoning level is like SBI PO mains or higher? No, Siddhant, it is not higher. That level of preparation is good enough. Quant sometime may be slightly difficult, but don't worry. Then you have to just cut the cutoff and move on. Right? I will come to the cutoff. If I am not eligible because of the age crown, you want to appear in the exam just for the experience, you have to then do it differently, right? My date of birth is 18th May 2001. No, Dhuni, you are not eligible unless you have some age relaxations, as I just discussed. Okay, last month maybe phase, sir, last 1 month maybe phase 2, clear it. Last month rock star, 1 month में phase 2 की तैयारी हो सकती है, provided you are very, very focused. Born on 20th April 2001, no crown music, not eligible. राजभाषा कोचिंग चाहिए, दिलीप कुशवाहा. आई थिंक राजभाषा कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, दिलीप आप एक बार देख लीजिए प्लीज. आई हैव क्लियर्ड एसबीआई पीओ, प्रत्युष अमित, but not joined yet. So how can I get NOC for this exam as mentioned in the note? So you have just cleared. Don't need NOC. अभी आपने join तो किया ही नहीं है. You have cleared the exam. You are not an employee of SBI right now, Pratish. So just apply without NOC. Is exam B special for RBI Grade B, also for other exam related to banking? So Rajendra Kade, RBI, you can see we have experienced people here in our faculty, those who have cleared RBI exam, myself, Sushil Regade sir, then Dr. Sharma, who was regional director with RBI. So we have experience of clearing exam. Then there are team of more than 20 faculty members here who are going to guide you. And likewise for banking exam, we all have also, we all and many of
our other colleagues have also cleared this bank PO exam. Sushil Lagde sir was with Allahabad Bank, I was with Oriental Bank of Commerce, Arnima ma'am was with Indian Overseas Bank, Vidika ma'am was with Indian Bank of India, Kailash sir was also with Union Bank of India. So our faculty members are those who have cleared these exams. So you can take that benefit of their guidance. मोनिका सिंह एग्जाम में 75 डेज वाली कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी आई कैन टेक सो उसमें जो भी आपको चाहिए प्लीज राइट टू अस और ईमेल अस और कॉल ऑन आवर नंबर 955 कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप इस पे भी बात कर सकते हो 24028 ठीक है सर सीए ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्कोर 55%। हाँ अभी सीए में इस बार कुछ लिखा नहीं है तो यस यू रिक्वायर I got my master's degree on 22nd January. Eligible? Prerna? No, not really. But you check your provisional degree certificate. अगर वो उससे पहले का है तो आप eligible हो जाएंगे. Do you have separate descriptive answer writing course for phase one? Sonu, no, not separate descriptive because ultimately it's one syllabus, it's one exam. There is so much of overlapping of the syllabus between ESI and FM. We cannot make one prepare for one particular like question. So we have a combined course for phase two. 25 days, only 25 days, Rockstar. You have actually 25 days this time, which is otherwise it used to be like 17, 18 days. I got my master's degree. This I have answered. 60% के लिए कितना CGPA होगा? चलो, now I'm coming to this. Okay. But first DEPR quickly. So DEPR में you need a degree in economics, finance, or this is the line which I was telling, master's degree in economics, finance, or MBA dual specialization. Many of you are asking this question. MBA with specialization in economics and finance. Clearly लिखा है ना? और कितना 55% मार्क्स चाहिए? Principal constituent with respect to syllabus curriculum means half or more in the total course elective credit must be economics or finance. Now this is clear. Many of you are asking, I have dual specialization. So if you have dual, so specialization with economics and finance means a third or more of the total courses elective the second year must be economics and finance. That is specialization. This is principal constituent. So here for specialization they have written more than one third. For principal constituent of the course economics and finance shall be more than 50%. Very clearly it is mentioned. Now you can apply here if you have that. DSIM, Department of Statistics and Information Management. Here you need statistics, mathematical economics, econometrics, statistics, informatics, applied statistics. You know that your degree is related to statistics. Master's degree is required, same 55% marks, and postgraduate diploma is also in the relevant field. This you were asking about the conversion to the percentage. If only if your university do not award percentage, then this criteria. Understand that. So if your university has clearly written the percentage, this does not apply to you. Only for those who have just GPA, but no percentage mentioned, this is the formula given here. Now coming to the exam. Asli cheez to ye hai, how you are going to prepare. I am reading your question meanwhile. Certificate should be issued between, OBC certificate. I have to read this. Amit, thank you for clarifying. OBC certificate should be issued between 1st January 2021 to the last date of application. So thank you, Amit. So those who are asking this question, when shall the OBC certificate be dated? So it has to be from the 1st January 2021. So this Amit has clarified. 60% का लिए कितना CGP चाहिए होगा ये मैंने बता दिया अशोक आपको. Then reading more, I have 58% in graduation. No, if you are from general category, Pranav Thakur, you are not eligible here unless you have a post-graduation degree. Manjeet Meena, sir, category certificate का number 11 digit का है, but the form allows only 10 digit. कोई बात नहीं, एक digit left side से छोड़ दो, don't worry. प्रीलिम्स का लेवल कौन सी होती है? प्रीलिम्स का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट इंपॉर्टेंट इज कंपटीशन टफ है.
So if you have gone through the mains of the PO exam, you won't find much difficult than that. These four topics: general awareness, English, quantitative aptitude, and reasoning. In general awareness, there will be more focus on economics and finance related news. So the preparation for this GA is going to help you in ESI a lot. This is 2 hour exam, separate time for each section. Here they have not mentioned, but I am telling you based on the last year time allotment. So this is 25 minutes for English, 25 minutes for quant, 45 minutes for reasoning, and 25 minutes for general awareness. So reasoning number of questions are double than the quant and English, where this is 30 question. Highest is GA, which is 40%. So GA, if you are good in GA, we have prepared separate videos how you can score 80% marks in GA, how you can do that. So we will do more such discussions, but that is very helpful. But you have section wise cutoff also, means you have to score in English, quant, reasoning, and GA separately to get the prelims clear. Last year cutoff was comparatively low. You can see 66.75 marks, and GA was 16, quant cutoff was 6, English cutoff was 6, and the reasoning cutoff was 12 marks. But previous to that, in 2019, it was 122 marks. So depending on the exam difficulty level, so you can estimate that last year exam was comparatively more difficult. Clear hai? Comparatively more difficult than the previous year. So don't worry about the exam difficulty level, because ultimately you have to beat the competition. You have to be better than the others. Hmm. You can read these numbers. Meanwhile, I am reading your question. While applying, it is mandatory. Yeah, Neelu, it is better that you mention where you are working. It shall not be a challenge later words. EWS certificate का ईयर वैलिडिटी मेंशनड, सो आई थिंक दैट इज हेल्पफुल. ओबीसी के लिए मुझे लगता है वैसे ही होगा, मुझे याद नहीं है. आई हैव 54 in 12th and 74 in my degree. You are eligible for this exam, Ganesh Pajade, because you have 74% in your degree. It does not matter what you have in 12th class. BTech CSE passed student eligible. Yes, why not? Soumya Deep Roy. So you are BTech. If you have BTech with 60% plus marks, so you are eligible. And how shall you prepare? So I have done various sessions. There is a video how to start RBI Grade B preparation from zero. Please go to that. It will help you, because that video itself is more than some 40-45 minutes. So I cannot repeat all that for the benefit of the time here. I can tell, but the point is right now there are more questions coming in. पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कब तक चलता है, कितने मंथ्स? मिस्टर इंजीनियर, 6 मंथ में हो जाएगा भाई. देखो, आपका जून में एग्जाम है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इंटरव्यू समवेयर इन द एंड ऑफ जुलाई. बाय अगस्त सितंबर इंटरव्यू शैल बी ओवर. बस, तो ये हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक. नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग भी आ सकती है, नहीं तो जनवरी में आ सकती है. तो इट डजंट टेक मोर देन लाइक 7-8 मंथ्स टोटल. बट कई बार थोड़ा स्पीडली हो जाता है. लास्ट टाइम थोड़ा डिले हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड. लास्ट टाइम मीन्स देयर वाज मेनी ऑन एंड ऑफ. so this time that situation is not there, so you can expect in 2022 में you can join RBI. Harish Agrawal, last year I reached my interview stage, but I was very afraid of interview and forgot even my name in the interview. How to tackle interview, Harish? So this is experience. तुम हरीश इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आए हमारे पास? मतलब हम यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस दिला रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज हु हैव बीन इन द इंटरव्यू बोर्ड. हमारे आप इंटरव्यू पैनल में लोग देखिए, दोज हु आर सीनियर लेवल एक्स ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई, डॉक्टर शर्मा, सीपी मोहन सर, तो ये लोग तो इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं, होते थे, बिकॉज नाउ दे आर रिटायर्ड. तो उस उनका एक्सपीरियंस आपको मिलता है. वी डू सो मेनी वन ऑन वन सेशंस. मैं हूँ, सुशील लगड़े सर हैं, अरुणिमा मैम है. वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पैनल. तो बिकॉज अब आप देखो हरीश, आप अपना नाम भी भूल गए, तो दिस इज नॉट अबाउट योर नॉलेज. नो, नॉलेज का कोई इशू ही नहीं है. मैं बार बार बोलते रहता हूँ, इंटरव्यू के लिए किताबें लेके पढ़ाई करने मत बैठो. इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस करो. Same way, when you are preparing for this exam right now, I am telling you guys, please everyone understand that practicing is very, very important. Either it is for phase 1 or for phase 2.
Unless you practice, it is not going to happen. Whatever amount of theoretical knowledge in phase 1, you will feel I know how to solve a percentage, but in the exam hall you will forget the percentage, simple interest formula, compound interest formula, you will forget there unless you do lot of practice. So for everything, see, this is all about control on the nerves. तो ये ना प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो पहले आपको प्रैक्टिस करना है क्यूआरई, जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में प्रैक्टिस कम होगा, चलेगा. तो सेक्शन वाइज, लाइक इन जीए, less preparation is less practice is fine because you have to study a lot. Again, coming to phase 2, you have to practice writing. Now 2/3 of the phase 2 exam is descriptive. two third आपको आंसर लिखने हैं. Whatever amount of knowledge you have, if you don't know how to express, how to write, and how to write in less words, I am telling you, mastery is writing in less word. हिंदी में हम उसको बोलते हैं ना, गागर में सागर भरना. वो सीखना है. वो नॉलेज भी चाहिए, बट नॉलेज के बियॉन्ड वो स्किल अगर नहीं आई तो ऐसी दिक्कत होती है. तो हरीश, आई विश यू बेस्ट लक दिस टाइम. बी better prepared, score more in written exam. I can tell you there are candidates, those who got selected in RBI Grade B even with 1 mark in the interview. तो आप एक तो एक स्ट्रेटेजी क्या है कि रिटर्न में इतना स्कोर करो कि इंटरव्यू में कम भी स्कोर आएगा फिर भी आप निकाल लोगे. स्ट्रेटेजी नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, व्हेन यू क्लियर द फेज 1 एग्जाम, फिर फेज 2 में लग जाओ. ज्यादा स्कोर करना है और फेज 2 के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करना. प्लीज प्रैक्टिस. हाँ, बिकॉज ये तो मतलब एक्सट्रीम हो गया कि आपको इंटरव्यू में नाम भी याद नहीं रहा. सर, आई एम गोइंग टू as per the syllabus but not taken any course, will I be able to clear? Ashish Nayak. So Ashish Nayak, the answer to this question is with you. What you do, attempt mock test, attempt previous year papers, and see how much you are scoring. If you are well beyond cutoff, then you can clear. Ultimately, पढ़ाई तो आपको करनी है. So you take course. It helps you in guidance. It helps you having all the content in one place. And the exam is so competitive. half a mark, 1 mark में तो बहुत कुछ दुनिया हिल जाती है. तो ये आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो. अब कैसे, अच्छा, फॉर एवरी टॉपिक आई एम गूगलिंग एंड राइटिंग शॉर्ट नोट. तो यू हैव टू सी हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच यू आर स्कोरिंग. इतने कम टाइम में क्या आप सारा कवर कर पाओगे? आर यू एबल टू स्कोर इन फेज 1 एंड फेज 2? अकॉर्डिंगली you decide whether you need a course or not. In RBI notification says our OBC certificate is issued 1st January and has been issued. So saying thank you Siddhant for clarifying this. It is acceptable, yeah, because after 1st January 21, my percentage in BCom is 54 and I have passed CA final. Am I eligible for Grade B exam? So what is your percentage in CA, Manish? If it is more than 60%, you are eligible. प्रेरणा कनौजिया, माई रिजल्ट डिक्लेयर ऑन सितंबर बट डेट मेंशन है डिग्री 22 जनवरी की. हाँ, तो आप यूनिवर्सिटी में पूछो, कुछ हो सकता है आपको कोई मार्कशीट या कुछ ऐसा मिल जाए जो सितंबर की हो लास्ट ईयर. दैट इज व्हाट आई वाज एक्चुअली टेलिंग. मेनी टाइम नो यूनिवर्सिटी डोंट रियलाइज कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है. मतलब वो इशू बाद में हुआ है सर्टिफिकेट, बट आपने पास तो पहले ही कर लिया था. तो आप यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ ऐसा शायद आपको मिल जाए. प्रेरणा, यू मे फाइंड समथिंग. CA Parag, sir, please clear eligibility of CA. So CA Parag, there is nothing mentioned for CA. So CA is considered a graduation degree, as I understand. Same 60% marks. SEBI grade A salary more than RBI grade B. नहीं नहीं, Jeremy H. So grade A is assistant manager, grade B is manager, and there is same pay scale in SEBI, RBI, NABARD, SIDBI, all these organizations. So grade B salary is higher. It depends on how they have mentioned, maybe pre settlement, post settlement, then the allowances. So it depends on that. Grade B की salary ज़्यादा है RBI में. Karthik Asthana, our PGDM student are eligible for officer. Yeah, PGDM are very much eligible. Karthik, Swamdeep, BTech eligible हैं, बिल्कुल eligible हैं. How shall I prepare? Please go to my video of how to prepare from zero. PGDM student eligible हैं. आशीष तिवारी, I am having EWS certificate which will expire. तो नया सर्टिफिकेट बना लो आप.
क्यों टेंशन लेनी है, ठीक है। प्लीज क्लियर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट आई मेंशन्ड। ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। बीएससी पास हैविंग 68% इन ग्रेजुएशन, सपना ठाकुर, यस यू आर वेरी मच एलिजिबल। SIDBI preparation help in Ashish Agrawal in RBI. I would say RBI preparation will help you in SIDBI, Ashish, because you have already reached the interview stage last time. So RBI syllabus is vast. If you are preparing for RBI, appear in SIDBI exam. That's it. My BCom percentage is 54%. I have passed year final. Manish, you have 60%, so you will be eligible in CA. Manu Srivastav, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जन से मेरा रिजल्ट मार्च में आया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? मनु, अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी के बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट पुरानी डेट की है, बिकॉज जैसे किसी और ने भी लिखा था सितंबर में था, तो आप ट्राई करो। I have to give exam for RBI Grade B Journal, 72% in SSC, 54 in HSC. My graduation is 70. तो आप भूल जाओ 10th 12th में क्या है HSC और SSC। You are eligible, गणेश पदा दे 74% है आपके, इसलिए आप एलिजिबल हो। ओके। गगन बिसेन, I have covered B PDF since November. Is it enough for GA? Yeah, it is enough for GA, but for ESI you will have to do more, especially the important news। ठीक है गणेश। अदरवाइज नंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी आपका एग्जाम मे में है, तो नंबर ऑनवर्ड्स इज गुड, बट यू रीड इट मेनी टाइम्स बिकॉज देयर विल बी फाइनर पॉइंट्स। जितना आपने अच्छे से पढ़ा होगा उतने अच्छे से आप वहां पे एग्जाम में कर पाओगे। ओके, बी विद 59.6, नो द पे 60% मिनिमम लिखा है। मनु श्रीवास्तव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जनवरी से, ये तो मैंने आपको बता दिया। थैंक्स टू करना फॉर मेकिंग अस एलिजिबल फॉर एग्जाम, राजेंद्र काड़े। सो देखो एलिजिबिलिटी तो हो जाएगी, बट मोर इम्पोर्टेंट इज क्लियरिंग। सो अंडरस्टैंड, देयर आर 3-4 lakh स्टूडेंट दोज हु विल अपीयर इन द एग्जाम, बट पॉइंट इज वेदर यू come in that 100 plus vacancies where you are eligible। Sir, both paper can apply, yeah, you can apply both for DEPR and general। अगर आप eligible हो समारा सा, so you can apply for both। And नीलू चक्रवर्ती, which condition will apply if SC candidate को 4 साल हो गए हैं बैंक में, तो एज एलिजिबिलिटी 33 ईयर हो गया, 35 देखना पड़ेगा यार, ये तो थोड़ा सा आई थिंक 35 तक होगी उसमें, क्योंकि आपको बैंकिंग 35 होगी, 35 ठीक है, मुझे यार समझ में आ गया। आई थिंक आई आंसर्ड यू। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कमलेश प्रधान, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कोर्स क्यों बेनिफिशियल नहीं होगा? ठीक है, और फीस और ये डिस्काउंट और ऑफर्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दैट। ये सब के लिए आपको वेबसाइट पे जाइए, आपको सारे ऑफर वहां दिख जाएंगे। और बाकी कुछ आपको पूछना है तो मैंने आपको बताया 95524028, 95524028, गलती कर रहा हूँ। Okay, sir, I can enroll for RIA, you can enroll for iExamB course, how to approach for phase 2। phase 2 के बारे में हम फिर डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। Your video about 90 plus in FM was before descriptive change। तो सिद्धांत, this is still useful, but we have also prepared some videos how to prepare for descriptive, and we'll continue to prepare। So please join that, join this channel, subscribe to this, we will keep updating such videos। ये आपका मैंने आंसर कर दिया, सर्टिफिकेट हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम और सिलेबस, देन वी विल क्लोज। ओके, टेंटेटिवली विद इन ए वीक आफ्टर द फेज 1 एग्जाम। तो फेज 1 एग्जाम आपका 28 मई को है, तो 3 जून तक आप मान लो आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। सो यू शैल नॉट वेट फॉर द रिजल्ट इन दिस टाइम, दिस टाइम यू शैल स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू द phase 2 exam। so phase 2 exam is 50% objective and 50% descriptive, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप 30 मिनट्स यहाँ पर है और 90 मिनट यहाँ पर है, टोटल 190 मिनट्स है। और आपको यहाँ पर जो descriptive question है, you have to type with the help of the keyboard। candidates opting to type the answers in Hindi may type with the help of the either InScript or Remington keyboard layout। so you have 2 types of keyboard if you are appearing in Hindi। some of you are asking this question whether I can appear in the descriptive exam in Hindi। so this is clearly mentioned, clearly यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप descriptive exam भी हिंदी में लिख सकते हो।
बट ऑफ कोर्स आप इंग्लिश का पेपर हिंदी में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है, राइट। अच्छा, एक और चीज क्या थी यहाँ पे, अगर आपने देखी, यहाँ पे इन्होंने इस बार चेंज ये किया, ये डिफरेंट कर दिया टाइम, 30 मिनट्स 90 मिनट्स, 120 मिनट्स तो है। अगर आप पेपर 3 में देखेंगे, पेपर 3 120 मिनट्स टोटल लिखा है, 30 90 अलग अलग नहीं लिखा है, बट इट डज नॉट मैटर मच बिकॉज ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स आर मोर देन एनफ। सेम 50% descriptive here and 50-50, 50% objective, 50% descriptive. Because this paper 2 is completely descriptive, that's why the weightage of the descriptive in the entire phase 2 is 2/3, है ना, क्योंकि ये तो 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव हो गया, 50 मार्क्स यहाँ डिस्क्रिप्टिव हो गया, 50 मार्क्स ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो 200 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है आउट ऑफ द 300 मार्क्स टोटल इन फेज 2। फिर 30 क्वेश्चन, राइट, फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 देयर विल बी 30 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, सम 2 मार्क्स एंड सम 1 मार्क्स, तभी तो 30 क्वेश्चन के 50 मार्क्स बनेंगे। In case of descriptive questions, 6 questions will be asked, so you will have choice. Out of the 6, you have to answer 4. ज्यादा नहीं लिखना है, अगर आप ज्यादा लिखोगे तो they will evaluate the first 4, but you will lose your time because you already have very limited time here. So you have to be very careful here. Sir, there are only 3 options in form to select, no option for राजभाषा। राजभाषा का कहीं तो होगा, वो मुझे देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा नहीं है। किशोर, ओके, which condition apply? I have answered that. I am OBC, bio third year student in BHU. No, you are not eligible because you are third year student, Abhishek Patel. And Nitil Rajput, did I approach for UPSC full economic and FM syllabus? No, Nitil, I'll come to syllabus. Economics का UPSC का पूरा syllabus क्यों पढ़ना है? I said no, this is not a paper of economics, this is a paper of economic and social issues. सर प्लीज इंक्रीज योर वॉइस, मुझे तो लगा मैं बहुत लाउडली बोल रहा हूँ, बट स्टिल इट इज नॉट कमिंग क्लियर, बट आई एम नॉट able to do much right now. अच्छा, वैसे thank you for saying this. Now I think it must be better. My MBA is going, but I have cleared graduation with 60%. Yes, Hemant, you are eligible. Hemant Thakur. Final year June 21 exam was conducted on October due to lockdown. That is also fine because anyhow this was done in October. No, so they are asking January 2022. So Sangama, you must be eligible then. Okay. अच्छा, but your result came in January. So आपको फिर तो देखना पड़ेगा, आपका result late हो गया. Now coming to the interview. So 75 marks का interview है, and we have already discussed about interview because Harish said that he reached to interview. कैसे तैयारी करनी, we'll come to that later. Now quickly go through the syllabus, then we'll close. So syllabus, there is no change. As I said, economic and social issues. This is not pure economics. Understand, you have to read all these topics in context of what is happening. You have to go a brief to the history, but understand what is happening today. Don't do a mistake of reading all these books. Just take one book. These books are just suggested reference material, right? So एक ही कोई book आप ले लोगे, and there also be very selective. More important is reading what is happening today. So they have written RBI website, but there also you have to be very selective because the RBI website is not meant for student. They are having this website mainly for the regulated institutions. So there you will find update, but you have to be selecting what you need to study. I am not reading it line by line because I have already done full videos on these topics. Similarly, for finance and management, here you will find there are topics which you have not read unless you are a finance student, but don't worry. Many a time we have observed that people worry more about FM paper. They feel all the topics are new. They never studied about risk management, derivative, or global financial market, financial inclusion. All these topics sound new, but see the score. Every year student score more in FM than they score in the ESI paper. Because the syllabus of ESI become vaster, you have to read a lot about the government scheme and many other data related to the economy, related to the society, related to the poverty, related to the growth rate, etc.
While in case of the FM, this is more theoretical here. You will still have to have some update about banking and financial system. But if you go as per the syllabus and you understand these topics well, you can actually complete the syllabus in the limited time. Management and ethics at workplace, ethics, corporate governance. So this is also, we have to study as per the syllabus here. So this is again theoretical. You can cover this in less time. First, ensure that you are clearing phase 1 exam. Many of these topics can be done in detail in the phase 2. And this is for DSIM and DEPR. This one is for DEPR. So DEPR, the exam is going to be held on 2nd July. More time, and the paper 2, 3 will be on 6th August. So you have more time. And here paper 1 is objective economics, paper 2 is descriptive economics, paper 3 is English descriptive. Similarly for DSIM, the exam dates are same. And here it is of statistics, paper 1 objective, paper 2 descriptive, and paper 3 is of English. So you read the notification in detail. All the best for your preparation. I am taking some of your questions, but the best time to start was yesterday. We have been telling about the notification. The next best time is now. Final exam was conducted in June. Result came. Okay, so this you have to check with the university only. Please suggest a book that completed all economic. No, Nitin, there is no such book which complete your syllabus for ESI or FM. There is no such book. Understand? In fact, because writing these reference material in the notification actually misguides many people. You have to go through the previous year paper. First, what I will suggest you before you start reading any book, go through the previous year paper. All previous year paper last 5 years are available on our website and it's for free. Just go to exambi.com. You will find these paper for free. Go through that, download that paper, and then you realize what kind of question come. You will find half of the questions will not come in any of the book. Any of the book I am telling you, because these are general awareness question in ESI related to what is happening today in inflation, what is happening today in the social indicators, different government schemes, their achievements. You won't find all that in any book. And also understand that phase 1 is going to be very, very tough. Very, very tough. So ensure that you get selected in phase 1. Okay, because of the eligibility, I will have 1 year gap. So Siddhant, you can't do anything about that. Appear in other exam. So after some time, NABARD notification will come. Then it may be SEBI, which will come. If you are eligible for Exim Bank, apply there. If you are eligible for SIDB, apply there. So RBI Grade B, this year exam is not the only thing. You have to get the success. There are multiple exam, and this also will come again. Don't worry. Okay. रिपोर्ट स्कीम करंट अफेयर 2 months में कैसे प्रिपेयर करें? हर्ष अग्रवाल, वी विल प्रिपेयर मोर वीडियोज ऑन हाउ टू स्कोर ऑन जीए, how to prepare for ESI, how to prepare for FM, but this one was the session for telling you your queries related to notification. Any one of you have more queries, please fill the Google form which is there in the survey, and we will answer your questions. अभी से तैयारी हो सकती है प्रियांशु. आई टोल्ड यू द बेस्ट टाइम वाज यस्टरडे बट द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे. अगर आप नहीं करोगे तो तभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है. फेज 1 कंप्लीट है नितिन राजपूत. आई एम हैप्पी टू हियर दैट. बट फेज 2 की तैयारी करने के लिए डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना आप. when you go through the previous question, then you will realize what kind of questions are asked. So guys, now let me pause here. You have any more questions, please ask at the link given in the form of Google form. We will be happy to answer. We will meet you again. Best wishes for your preparation. अभी से तैयारी में जुट जाओ, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है. Okay, have a good day. Thank you.